from witnessing one of the best matches here in Sharjah Cricket Stadium. And joining me in the comm box is none other than the famous commentator in tape ball cricket in Pakistan, Daud Boch. Welcome Daud. बहुत खुशामदीद. Thank you so much आसिम. और अब क्योंकि मुझे सांस इस तरह चढ़ गया क्योंकि शारजा क्रिकेट स्टेडियम में कॉम बॉक्स से पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि आज क्राउड बहुत ज्यादा पहुंचा है यहाँ पे. रश लगी, रश हो गया यहाँ पे, रश और लस ग्रीन आउटफील्ड भी है. देखिए साइकिल क्रिकेट बड़े एक्साइटेड नजर आ रहे हैं यहाँ पे. कौन कहेगा ये है टेप बॉल का मैच, कौन कहेगा ये टेप बॉल का मैच. यहाँ पे तमाशाई आए हुए हैं हर एक मौके का लुफ्त उठाने के लिए. इसी का इंतजार था. मैं कहूंगा दाऊद, यहाँ पे लोग कल रात में 10:30 बजे आए थे ग्राउंड पर ये पूछने के लिए कि तैमूर मिर्जा खुर्रम चकवाल का मैच कब है इंडिया के खिलाफ. बिल्कुल डेफिनेटली. और ये अब वो घड़ियां आ चुकी हैं. पाक MWI वर्सेस टीम फ्रेंड्स 11 इंडिया का मैच होगा. और इसी के साथ पाक MWI का स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन. छोटा विकी और तैमूर मिर्जा आए हैं यहां पर सलामी बल्लेबाजी करने. तनसीर बॉलिंग करेंगे यहां इंडिया की जानिब. पहला ओवर करते हुए यहां तनसीर. बिल्कुल तनसीर, लेकिन सामना है धरती पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट का नंबर 1 खिलाड़ी माना जाता है तैमूर मिर्जा. टेप बॉल क्रिकेट का यूनो शायद अफरीदी माना जाता है. दूसरी जानिब आपके विराट कोहली की तरह ही दिखने वाला बंटी पटेल. सो बिग मैच होने जा रहा है. मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूं. आसिम, आप इस मैच को लेकर कहां तक एक्साइटेड हैं? इस बालवा में ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस. टेप बॉल के शाहिद अफरीदी पहली बॉल पे यहां फर्स्ट बॉल डक, गोल्डन डक फॉर तैमूर मिर्जा. एंड व्हाट अ विकेट, बिग विकेट हियर दाऊद. बिल्कुल साइकिल क्रिकेट, यहाँ पे क्राउड की एक्साइटमेंट और प्लेयर्स आप देख सकते हैं. एक बॉल था, थोड़ा सा बाउंस ले लिया था, प्रॉपर टाइम नहीं कर सके और ये बेहतरीन कैच. सो पहला विकेट जो है वो नाम आ चुका है. आप एक्साइटमेंट देखें किस अंदाज से यहाँ पे विकेट गिराया गया है तैमूर मिर्जा का. Big wicket, big wicket I'll say. And that ball pumped as Tैमूr Mirza just indicating to Khurram Chakwal that that ball sticked onto the surface and it pumped up. As a result, he could not get underneath the ball. Big wicket here falling in. And Tansir is the man with the golden arm who struck first blood. Friends India, they have picked up the big man, danger man, Tैमूर Mirza. कितने रन का डिफरेंस बन सकता है दाऊद इस विकेट से? अब तैमूर के आउट होने के बाद डेफिनेटली थोड़ा सा तैमूर की कमी जरूर महसूस होगी. लेकिन आपको पता है पाकिस्तान टेप बॉल क्रिकेट के अंदर बैट्समैन ऐसे हैं, ज्यादातर बैटर पाए जाते हैं. और अब ये जैसे किंग ऑफ एशियन को कहा जाता है, खुर्रम चकवाल अब आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए. और तनसीर यहां पर और ये चांस पुट डाउन. हैज ही पुट डाउन द मैच? Krishna Satpute. Oh my goodness. That would have been the match for Team Friends India. खुर्रम चकवाल थोड़े बेबस नजर आए क्योंकि जिस अंदाज से बॉल खेला और बिल्कुल एक फ्लिक करना चाह रहे थे, हुक करना चाह रहे थे, लेकिन टाइम सही तरीके से नहीं कर पाए. बट कप्तान कृष्णा ने यहाँ पे कैच छोड़ा है. और अमूमन लोग मिसालें देते हैं कि मैच छोड़ा है, लेकिन यहाँ पे अभी मैच की बात नहीं हम कर सकते क्योंकि यहाँ पे आखिरी बॉल तक जाने वाले ये मुकाबले होंगे. आसिम, काफी सही बात कही है दाऊद. काफी शानदार गेंद यहाँ पर ब्लॉक होल में की थी गेम. छोटा विकी काफी रिकॉर्ड इनके नाम पर. और देखना होगा क्या कमाल करते हैं आज ये शारजा स्टेडियम में. आसिम, दुनिया टेप बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला, क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि इतना बड़ा मैच हो जाए. और आज इस फायर से मैं बता रहा हूं एज ए कॉम बॉक्स में दाऊद बूच के भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द इवेंट मैनेजर एंड आई मैनेज दिस इवेंट एंड आई मैनेज दिस मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. और इसी के साथ यहां पे एज लगता हुआ बॉल कवर की जानिब और इसी के साथ मिलेगा एक सिंगल. आसिम, आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से. अलग जज्बात हैं और टेप बॉल क्रिकेट 2 दिल 1 जान मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. बिल्कुल, काफी शानदार तरीके से आपने कहा है. लेकिन एज अ कमेंटेटर आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड टू बी न्यूट्रल, बी इट इंडिया, बी इट पाकिस्तान, बी इट एनी टीम. डेफिनेटली. और इस दफा एक बेहतरीन शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद होंगे. 1 रन आधे का आसानी.
तैमूर मिर्जा, खुर्रम चकवाल, छोटा विकी। पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर 5, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या कमाल का ओवर यहां पे किया है तनसीर ने। बड़े बेहतरीन गेंदबाज हैं तनसीर, क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने मुजामिल कामुकी को विकेट निकाला जब एफएमटी के यूएई की टीम के साथ मैच था। सो पहले ओवर के हाथ में 5 रन जरूर आए हैं। क्राउड बड़ा चार्ज नजर आ रहा है और शारजाह क्रिकेट स्टेडियम क्राउड के लिहाज से बड़ा मशहूर रहता है। आसिम, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, और मैं किसी डोमेस्टिक मैच में इतना क्राउड नहीं देखा हूं आज तक मैंने डोमेस्टिक मैच में यहां पर बिल्कुल भी इतना क्राउड नहीं देखा। बिल्कुल, कप्तान यहाँ पे कृष्णा और उनके साथ साथ जिग्नेश, बंटी पटेल समझाते हुए उनके साथ शबीर कि किसको ओवर के लिए लाया जाए ये अब देखना जरूरी है, लेकिन आई थिंक जिग्नेश को लाया गया है। जिग्नेश ने पिछले मुकाबले में बड़ी शानदार बॉलिंग करी थी, काफी शानदार गेंदबाजी की थी। ओवरऑल इंडिया के बॉलर्स ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और इसी के साथ देखना होगा यहाँ पर छोटा विकी जो दिखने में काफी खुशदिल शाह नजर आते हैं। खुशदिल का नाम आगे, ये हमारे चच्चा इफ्तिखार जैसे दिखते हैं। रहीम का लिए तुम्हारे चच्चा इफ्तिखार जैसे हैं ना। चांद तक ना चले तो सिर्फ काम तक। उनका काम ही काफी है, उनका काम ही बोलता है। और ये यहाँ पे क्योंकि बड़ा मैच है उसका प्रेशर होता है डेफिनेटली, बार-बार फील्ड में रद्द-बदल की जा रही है। और दूसरी जानिब टीम पाकिस्तानी जो बैटर्स है वो आई थिंक क्योंकि उनका मोराल है टेबल क्रिकेट में, जिस तरह भी पहले ओवर में सिर्फ 5 रन आए, इस तरह का टेबल क्रिकेट में मोराल नहीं होता है इन बैट्समैन का, क्योंकि प्रेशर है। दोनों टीम जहां पे जान लगाती दिखाई देगी। हाँ, वो किसी भी फील्ड में मैच हो इंडिया पाकिस्तान को तो डेफिनेटली शायकीन क्रिकेट और उसकी अलग से ही रोमांचित मतलब के माहौल रहता है। रोमांचक का ये आपने जो हिंदी का प्रयोग किया है कमाल का किया है दाऊद। और इसी के साथ वाइड गेंद करार दी गई यहाँ पर। बिल्कुल एक्स्ट्रा जरूर आ जाएगा, वाइड बॉल होगा। सो ये चीजें टेबल क्रिकेट की आज खूबसूरती और आज मेरे लिए सबसे बड़े एजाज का दिन है। नवीद अहमद साहब जिन्होंने इवेंट मुनक्किद किया, शबीर अहमद उनके साथ साथ आइकॉनिक गिफ्ट सेंटर के जो वाइस चेयरमैन है खबर लतीफ साहब, आज उनके लिए बड़े एजाज का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुरूर है क्योंकि आज तक कभी भी आपने टेबल क्रिकेट का इस तरह का इस लेवल का फर्स्ट लेवल का इवेंट नहीं देखा होगा। वेल, इससे पहले जो इंडिया पाकिस्तान डोमेस्टिक लेवल पे हुआ था मैच वो था हार्ड टेनिस बॉल से, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होते जिसमें जहीर खालिया ये वो अलग अलग टीम से खेल रहे थे। लेकिन इस एक मुकाबले के लिए सुपरस्टार्स को एक साथ बुलाया गया था, एक मैच के एक टीम बनाकर खेली गई थी वो, और कमाल का मैच था। इंडिया वो मैच जरूर जीता था और आज वो मौका होगा जहां पाकिस्तान उसको पे बैक करना चाहेगा। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन छोटा भी की मुल्तान बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे तो बिल्कुल लाके गिरा बॉल, एफर्ट यहां पे जरूर की और बंटी हंसे भी, थोड़ा मुस्कुराए भी। जिग्नेश, आपको दिखना जरूरी, क्या देंगे संदेश बैट्समैन को? और ये नो बॉल, बॉल पिच हुई विकेट के बाहर और ये करार दिया गया नो बॉल। ये फ्री हिट होगी और इसमें खुर्रम चकवाल काफी यहां पर इसका लाभ उठाते हुए कोशिश जरूर होगी कि इस पे 6 मारा जाए। पहले ओवर का अभी तक के लिए 8 रन हुए चले हैं, लेकिन उसके बावजूद और इस दफा आगाज किया है खुर्रम चकवाल ने, पहला छक्का लॉन्च कर दिया है। बेहतरीन यहां पे आगाज और पहली बाउंड्री, कुफर टूटा है हुदा हुदा करके। काफी शानदार शॉट यहां पर खुर्रम चकवाल के बल्ले से फ्री हिट थी और इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया खुर्रम चकवाल ने। और इस दफा डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हिट 6 नंबर सेकंड बाय किंग ऑफ एशिया खुर्रम चकवाल। Khurram Chakwal has announced his arrival in Sharjah Cricket Stadium. Look at that, you always see sixes of cross batted in tape ball cricket, but this is straight bat shot from Khurram Chakwal. You can say flick shot. With the face showing directly onto the face of the bowler. Jignesh got ready again. Up in the sky, catches a call. और oh my goodness, effort थी, लेकिन यहाँ पे बाल बच पाए। बेहतरीन यहाँ पे एफर्ट। थोड़ी सी आगे गिरी वहां पे फील्डर के, कोशिश जरूर थी वहां पे कैच के लिए जाने के लिए,
लेकिन यहां पर मिस हिट जरूर था, लेकिन कोशिश की लेकिन नाकाम रहे वहां पर फील्डर। 2 रन पूरे करेंगे यहां पर खुरम चकवाल। 22 for 1, 17 रन आए इस ओवर में। बिल्कुल डेफिनेटली, और ये इस दफा पावरफुल हिट की है। ओह माय गॉडनेस, फील्डर थोड़े से आगे थे लेकिन यहां पे कैच अब ड्रॉप किया गया है। तीसरा छक्का किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल के बल्ले से आता हुआ। Oh well, that should have been taken. He came in steaming inside. Shane Desi, misjudgment to its fullest. Look at that. Had he been on the ropes, that should have been taken down. बिल्कुल डेफिनेटली, जिग्नेश को 3 छक्कों की सूरत में खुरम चकवाल ने संदेश जरूर दिया है यहां पे। Shot again, goes high. 6 number 4 has been done by King of Asia खुरम चकवाल। शानदार हिट यहां पर खुरम चकवाल की। तैमूर मिर्जा फ्लॉप जरूर हुए, लेकिन यहां पर किंग ऑफ एशिया काफी कमाल की हिटिंग। यहां पे 4 छक्के मारे इस ओवर में जिग्नेश को। बहुत क्लीन हिटिंग। पाक MWI 34 for 1 after 2 overs. और इस पहली ही बॉल और बिल्कुल आगे गिरा। टेबल क्रिकेट में अगर आप बड़े शॉट्स खेलते हैं तो डेफिनेटली फिर पावर आपको फोर्स जरूर चाहिए होती है। आसिम, बिल्कुल पूरी तरीके से एग्री करूंगा इस बात पे। मैं आपको हाइट भी देना जरूरी होता है, क्योंकि कोई बॉल जो मिस हिट होती है वो क्योंकि इतने जोर से लगी हुई होती है बॉल कि वो हवा में जब घूमती रहती है वो ऑलरेडी बाउंड्री क्लियर कर चुकी होती है, मिस हिट भी। बिल्कुल डेफिनेटली, और इस टाइम हमारे साथ व्यूअरशिप है वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। टोटल व्यूअरशिप इस इवेंट की 1 मिलियन। पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला है वो देखते हुए सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी दुनिया टेबल क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। टोटल व्यूअरशिप यूट्यूब और फेसबुक पर मिला के 1 मिलियन तक जाके पहुंची है, क्योंकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यूज किया जा रहा है। और इस टाइम कृष्णा सतपुते का जो यूट्यूब चैनल है 57,000 लोग उसके ऊपर लाइव टेलीकास्ट करते हुए। काफी कमाल, काफी कमाल। ये होती है फैन फॉलोइंग, ये होती है क्रिकेट के लिए मोहब्बत। जियो सुपर की स्क्रीन पे, और इस दफा मिस्ड शॉट है। ओह माय गॉडनेस, छोटा विकी को यहां पे जाना पड़ेगा। बंटी पटेल ये हर जगह मौजूद है ग्राउंड में। किसी भी सक्सेस स्टोरी के पीछे है बंटी पटेल। यस, ही इज द मैन ऑफ द क्राइसिस। एक बिल्कुल यहाँ पे बैट का जो बॉटम था थोड़ा सा उसके ऊपर लगा बॉल, और यहाँ पे बेहतरीन कैच। छोटा विकी मुल्तान में उसी से वापस 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आसिम, मेरा ताल्लुक गुजरात के इलाके भूज से है और मैंने वहां से स्ट्रगल शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेबल क्रिकेट की कमेंट्री सीखी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए सबसे बड़े एजाज की बात है कि बीइंग द पार्ट ऑफ दिस इवेंट मैनेजर, क्योंकि मैनेज किया है और मैं एक गांव लेवल से बिलोंग करता हूं। आज सबसे बड़े एजाज की बात है कि मेरा अलग कंट्री और मैं दूसरे कंट्री में आके ये इवेंट को मैनेज कर रहा हूँ, इवेंट मैनेजर हूँ। तो इसके हवाले से आपसे मैं राय लेना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काफी शानदार टूर्नामेंट रहा यहाँ पर, और जिस तरीके से सपोर्ट आपको खावर लतीफ और मिस्टर नवीद से मिला है, मैं कहूँगा ओवरऑल सारी मैनेजमेंट, यू नो, एवरीवन हैज स्टूड यू नो बिहाइंड योर बैक टू इंश्योर दैट एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस।
It was not easy for you to manage everything because coming in from a different country altogether, managing everything was not easy. So you got that support coming in from everybody, and in order to make such an event successful, you need support coming through. Yes, all right, बिल्कुल चेयरमैन नवीद अहमद दुनिया टेबल क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट करवाने वाले वो चेयरमैन है सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी के। गेंदबाज तैयार। Oh my goodness, एक्स्ट्रा वाइड बॉल आ जाएगी। देखना होगा। वेल राइट कॉल देयर फ्रॉम द एम्पायर। यस, फहद मियां चलो काफी बाहर की तरफ चले गए थे जरूर, लेकिन इसीलिए मेरे ख्याल से थोड़े से यहाँ पे नाखुश थे तनसीर। ये यहां तक आज टेबल क्रिकेट पहुंची है तो ये सारे का सारा क्रेडिट हमारे स्पॉन्सर्स को जाता है, हमारे सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से आज टेबल क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे होने जा रही है। और स्पॉन्सर्स के वाले बताजल फरहाद इकबाल पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के बड़े मशहूर स्पॉन्सर हैं, उनके साथ साथ पप्पू जापानी। सो डिफरेंट है मैं, क्योंकि आज टेबल क्रिकेट नवीद साहब उन सबके लीडर बन गए हैं। टेबल क्रिकेट को इस लेवल पे पहुंचा दिया है कि इस यहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। नदीम भाई हमारे साथी कमेंटेटर हैं, लेकिन उनका दिल है बड़े जज्बात पे काबू करके बैठे। Well, absolutely, you're right. The names I'm not pretty familiar with, but yes, you know, definitely all the people who are supporting cricket around the world, huge salute to everyone. Be it small teams in a village, or be it the teams of the district, be it the teams coming out here and playing, be it any team. Respect and salute to all the. और इस बॉल लॉन्च कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बेहतरीन छक्का, किंग का बल्ला, माशाअल्लाह, बेहतरीन छक्का खुरम चकवाल के बल्ले से। 10 बॉल पे 35 रन बना रखे हैं खुरम चकवाल ने, और एक पनिश किया है एक अंदाज से। काफी शानदार हिट यहाँ पर। अच्छी गेंद थी, मैं कहूंगा बुरी गेंद नहीं थी ये, लेकिन जिस तरीके से शॉट खेला है वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ, और काफी कमाल की बल्लेबाजी यहाँ। 3 overs 44 for 2। बिल्कुल इसी के साथ दाऊद बूच आपसे इजाजत चाहता है। अभी आपका साथ देंगे वन एंड ओनली मिस्टर नदीम। Welcome back, Nadeem, and it is Bunty Patel who has the ball with him. Beautifully bowled. Very well bowled there by Bunty Patel. Fahad, who wanted to go across the line, just missing it. Well, Asam, I see Fahad Miachanu is struggling to pick the bowlers. And these bowlers have got quality. They are able to bowl slow cutter, slow ones, leg cutter. This is not going to be easy. And what a wicket it was in the first ball itself. The TM, the brand got dismissed. What a start to this game, right? Look at the silence it brought in the crowd. Everyone was, it was pin drop silence here in Sharjah Stadium. Exactly, did. And this time, Khurram Chapwal. Bowled. Has been bowled out. What a ball, what a blow coming out from Bunty. He's bowled him right in the block hole. He switched, he shuffled, and that was enough for Bunty to go through the gates. Look at that, right in the block hole. Bunty wasn't sure, so wasn't Krishna. Look at that. It hit the bottom of the leg stump. And Asif, this is the same way Khurram Chapwal got dismissed against FMTK UAE earlier on. Absolutely, and they are trying the base of the leg stump. They are trying to hit the base of the leg stump. And that's how Bunty had uprooted Khurram Chapwal. So, 3 big names are back in the pavilion. Taimur Mirza, Chota Vicky, followed by Khurram Chapwal. Exactly. 3 massive wickets are already fallen for Pak MWI. Let me tell you guys, this is a much anticipated match after the tournament happening right now.
Pakistan, and they came here literally in the ground to watch Taimur Mirza. Taimur Mirza is that personality, the Shahid Afridi of tape ball cricket. Be it Shahid Afridi or be it Sachin Tendulkar for India, and this time it gone for another boundary, very important boundary coming up for Pak MWI. Well, a pretty surprising field setup here. They don't have a long leg, and all he had to do was just flick the ball. There was no man patrolling that area. This is not a wise field setup. That man who in the short third, in fact the third man should be standing a little finer on the leg side. Again, if he flicks it pretty nicely, it's going to go for 4. Very important point raised by Yasin, because most of these players of Pak MWI, they like to play on the leg side, so need to have compact field to cover that particular area. Meanwhile, Bunty bowling to Sarmad, and this time, well, I think it was a chance. Krishna could not really get hold on that particular delivery. That was dropped and he's not happy. He's the man who's putting his heart and soul in the game. Look at that. Bunty Patel getting that outside edge, and Krishna pulled it down. Pulled him down there. He is upset. Look at his reaction. Bunty plays with his heart and soul his game, and we have seen even when he bats, if he misses any ball, he gets very angry with himself. But what a player Bunty Patel already. Remembering Ben Stokes here. Yes, yes indeed. Bunty Patel will be bowling to Sarmad. What an hour already this has been. Pulled, and there is a fielder who misjudges it. Mushahir. Well, it's just not turning out to be his day. Mushahir was mediocre with the bat in the first innings, and he was waiting, I don't know for what. Well, Mushahir really just before a couple of deliveries, as Asim mentioned, that he should be a little finer with the kind of pace which is being generated by Bunty. Well, Bunty is being very unlucky here. He has already dismissed the king Khurram Chakwal, but he could have easily got another wicket. Earlier on, the catch was dropped by the wicketkeeper Krishna, and this time the fielder was standing much wider. It cost a boundary. Imagine it would have been 4 down for Pak MWI at 49 had that catch been taken, and Krishna hasn't been up to his level, I would say. Chance for the fielder, taken by Krishna. This is the other Krishna, and he makes no mistake. Bunty Patel picks up his second wicket of the over. Look at that. I think it's the pace which has beaten the batter. He did not get the elevation which he was looking forward. But what an over coming up from Bunty Patel. He is a superstar already. Look at that. He has just given 8 runs in this crucial over and taken 2 wickets. One of the tape ball cricket king, which is Khurram Chakwal. He is known as the king of tape ball cricket in Pakistan. This way I call him. He dismissed him, and then on the last ball he has dismissed Sarmad. So 2 wickets he has taken, given away just 8 runs. This over can be the over of the match, Asim. Absolutely. And if he makes a comeback, if team friends India they bounce back in this contest, it has to be by picking up wickets. 53 for 4 after 4 overs. 2 more overs to go. If they finish at around 80 run mark, I think they would start to believe that they have a chance. Because they have a very decent net run rate. They just have 1 win in 4 games. If they win the second one, they still have a chance of qualifying to the semi-finals. It's not just about qualifying for the semi-finals, Asim. It's just about this game itself. It is very much anticipated. Usually, as we know that in any tournament, international level tournament, when India Pakistan players with each other, they say this is the final. Can I tell you something? Nadeem, if Friends India win this game, there is a high possibility of the same match repeating in the semi-finals. Maybe, and if it happens really, I think these spectators will have their full money cashed. Well, absolutely. It can be a repeat action. It should be a repeat action in my opinion, if you want to see a thrilling
end to this tournament. It's Shabir, the new man, who's going to be bowling from the Bukhatir end here. What a game here we have had. Pendulum has kept swinging. That onslaught from Khurram Chakwal, if that wouldn't have come, Team Pak MWI would have been in trouble by now. Thanks to that little cameo of Khurram Chakwal, if he has hit few shots out of the park, otherwise Park MWI would have been in trouble. Fadian Channu, he has played 4 balls and just hit a run. Another slower one. This is something interesting and this is something special with these French Indians bowlers. Didn't you predict that, Nadeem? That these slow ones, these cutters, these variations are going to trouble Pak MWI batters. And that is exactly what has happened here. Because I have played a lot of cricket back, 10 years back with some of these tape ball cricketers. And as I told you, I myself was quite better, good in bowling. And I used to do these techniques because if you keep on bowling with one pace, you will be punished with in tape ball. But if you have this kind of deliveries and you execute them well, you do not bowl them short, you do not bowl them full tosses, they can trouble any batter. And these people have been trained, have been used to hit through the line. They see the pace coming and they hit. Again, a cracking delivery coming in from Shabir. Fahad Mia Channu just not able to get completely under that one. What an over here so far from Shabir. He just conceded 3 runs in this over of the 4 balls that he has bowled. Mind-blowing stuff. Mind-blowing. Some good overs are coming up. Earlier on with Bunty and now Shamsher. This time there was an opportunity and he missed it. For a moment I thought he might be able to hit it, but what a brilliant over coming up. This is the second last over of this game and still Park MWI could manage to score only 56 runs. Well, let me tell you that if somehow Friends India restricts Park MWI below 70, we have definitely match on. Well, we still anyways have a match on because the kind of performance they put in the previous games. Up in the air, chance. Fielder coming underneath it and puts it down. Oh my goodness. Oh my goodness. Coming underneath the ball, judging it perfectly and puts it down. "56 into 57 for 4 after 5 overs. What a game of cricket. What a match. Can they somehow manage to get to 75-80 from here? 57 for 4 right now after 5. They definitely need a couple of big hits. If they get around 3 in this over, they will start to believe that they have a decent total on board. But right now, I think that it is a fantastic comeback from Team Friends India. Starts off with a wide and extras to start off here. "58 for 4. It's Shanil. That has been heaved onto the onside. Starts the over with a wide and a 6. It is Umar Gujjar. That's Gujjar power for you. Pulling the ball from outside the off stump and depositing it on the square leg boundary for a 6. Big hit of the bat of Umar Gujjar. Krishna Satpute wasn't ready at all. Missing at completely and they'll run for a bye. A very good delivery there from Shan. It was a low full toss,
but the ball was swinging. It was swinging in, completely missing the line of the ball. Again, Shanil comes in. Ah, very good delivery, very good delivery. Missing the line completely. Fahad Mia Channu is struggling. He has faced 6 deliveries just for 2. Beautifully bowled. Excellent delivery. Singles are like gold dust now, especially when you're bowling to Fahad Mia Channu, who knows a thing or two about hitting the ball big. 2 sixes now can pull the game back in favor of Pak MWI. Can they get those 2 sixes now? Shanil. He gets one of it. Belted that. Clobbered it over the square leg boundary for a 6. One of the 2, I reckon. Shanil has gone for runs. 14 of them in the 5 balls. 2 sixes to finish, and Pakistan MWI, they will believe that they have put a decent total on board. They have got 78 runs. Well, absolutely, it's just about the Bunty Patel show. If it continues, it's going to be a different game altogether. We'll dive into a quick short break, and we'll be back with a live action of this run chase live from Sharjah Cricket Stadium. Until then, stay tuned.
Championship trophy. Massive crowd is here in the World Guinness Record Holder Stadium, which is called Home of Cricket here in UAE. We are bringing you live telecast from Sharjah Cricket Stadium. The match is being played two best sides of the tournament, if I say, I will not be wrong, and that is Pak MWI against Friends India. Well, usually talking about tape ball, it's all Pakistanis who are famous for it, and the likes of Taimur Mirza, Khurram Chakwal, Fatmia Chanu, and many others. But let me tell you that Friend India came up to show the competition. They are making life difficult for all their opponents, and the kind of game which Bunty has shown us, Mashair and Krishna, well, I'll tell you that this is going to be very interesting. And the interesting decision taken here by Friends India, that both the Krishnas have come to do the opening. Bunty Patel is not there in the middle. Maybe they are saving it, maybe they will send him first down, or maybe at number 4 position. We will find out quickly. But a cracker of the match is happening here in Sharjah Cricket Stadium. Literally speaking, if I say the match is happening between Pakistan and India in tape ball, it won't be wrong. Welcome viewers back, and I am live here in the team from Sharjah Cricket Stadium. Welcome back viewers, this is Nadeem live from Sharjah Cricket Stadium, and this match is being played between Pak MWI and Friends India. A cracker of a match. Well, it's ZK Zahir Kalia is opening the bowling for Pak MWI, and he is up against the Krishna. A massive match. Friends India versus Pak MWI. They need 79 runs in 36 deliveries. ZK Zahir Kalia will be bowling against Krishna. Here we go. And he started with the dot delivery. Zahir Kalia is a brand. He is a big match player. He is famous for his experience, technique, pace. And if Pak MWI is going to win this match, much more depend upon this particular person on the screen, ZK Zahir Kalia. Well, welcome back Asim after a short break. Well, definitely very short break there. Zahir Kalia will be out there. Started off with the dot. Both the Krishnas, KG and KS, out there in the center. Right in the block hole. He had no answers to that, Krishna. That's first blood drawn by Zahir Kalia, Ustad, and that's why they called him as the Ustad. Well, Ustad has delivered it. What a blow, what a punch. Second ball of the inning of Friends India, and they lost Krishna. Well, Asim, interesting decision. No Bunty Patel. Well, I think this is one of the reasons why he is the living legend. Right in the block hole. Too quick. Too quick and right in the block hole as you defined it. Well, what a delivery. What a delivery coming out from ZK. And now still no Bunty Patel. Seems like they want to hold his wicket back. I don't know for what. I don't know whether he is okay or they want to save him. They do not want him to play against Zahir Kalia. I'm not sure what is the plan. But he's your match winner. You can't keep him too later in the inning. Well, absolutely. You just need runs here. 79 to get of 34 balls. You need a start. You need a flying start. You want to win this match to stay alive in the tournament.
Friends India. And it is Subsheed who's out there. He'll be facing Zahir. Should be wide, and it is a wide. Wide outside the off stump. Exactly. Clever batting this time from Subsheed. Didn't really try to hit that ball. Well, first time we are seeing a tape ball cricket match is being played between the players from Pakistan and players from India. This is something, is the beauty of Superfix Championship Trophy. And it's none other than the brand in bowling, tape ball cricket. It's Zahir Kalia. And he's up. 9. He is steaming in. He is quick. He is express. Zahir Express. Right through the gate and through the wicket keeper as well. How did that miss the stumps? How did they miss the stump? Exactly. And why keeper couldn't collect that ball? Look at that. It kept low after hitting the deck. Brilliantly bowled. Not sure how do the local Pakistani batters manage to hit Zahir Kalia for sixes. I'm not sure. Because I have played him 12 years ago. He was, let me tell you that he was even 4 to 5 miles quicker than what he is doing right now. Zahir Express has definitely left the station and he is steaming. Not sure where the next station is for Zahir Kalia. Where will he stop? This time we need to see the signal from the umpire. Yes, it's a wide delivery. Well, Asim, technically speaking, if they negotiate Zahir, take singles and doubles as well, take at least 8 to 9 runs in his over, and then they have a, definite chances to go and attack the other bowlers. Well, but whom will you attack? There is a lot of options available in this men in green side, and they will be pumped because of the intensity of this match, because of the look at the crowd which is there coming out and witnessing this game. This is going to be a high intensity match. It's not a very high scoring, but it is, as per the tape ball standard, it is a decent score on board. It's a decent score indeed. Now Subsheed on strike, full toss, beaten with the pace. Well, this was an opportunity for Subsheed. This is what makes you different from the regular professional tape ball players. Had you given that to a Taimur Mirza or a Chota Vicky or a Kuram Chakwal or a Osama, that would have been launched outside the stadium. Exactly. But no, we are not going to take any credit out of Friends Indians. They are playing first time a tournament of the tape ball, but they are competing it well. And I'm sure that with the passage of time, they will give a very tough competition to any side in the world as far as tape ball cricket is concerned. Absolutely. Zahir Kalia into his 5th ball. He has picked up a wicket here of Krishna in the first over. Helicopter comes out from Krishna Satpute. He wants to come back for 2, but rightly said no there by Subsheed. Now this decision of holding Bunty Patel back can backfire to Friends India, because he was the one who's in form, and if you're not letting your best batter to bat maximum number of balls, you are inviting trouble for yourself. Exactly, 37 needed on 31 balls. You need to have your best player in the middle, no matter. We have seen over the years, Sachin was equally the best batter from Indian side. 90% of the Indian batting depended upon Sachin, but Sachin always used to come as an opener. You have to be brave enough to challenge. At that time when it was Wasim Akram and Waqar Yunus was operating, he was coming as an opener. Absolutely, that was how legends value themselves. Nicely bowled and equally well dealt with by Subsheed. Brilliant bowling here from the Ustad of tape ball cricket, Colonel Zahid. I beg your pardon, it's Zahir Kalia.
7 for 1 after the end of the first over. Brilliant over coming up from Zahir Kalia. He has taken a wicket and just gave away 7 runs. 72 needed in 30 balls. This is very much possible, but they now need to take a charge on the other bowlers. Otherwise, it will be too late. Well, they do not want it. They do not want this to be kept for later than this. A lot of discussions coming through from all the senior players in the side. Fadmiya Channu, Chota Vicky, Taimur Mirza, Zahir Kalia, and there is Umar Gujjar as well. So they are definitely going in for the express left arm quickie, Shehzad. Yes, Shehzad has impressed a lot with his pace, but the problem with Shehzad, he bowls too many wide and no balls. And if he does it here, this can become very costly for Pak MWI. Definitely, it's going to be tough if they do not find runs here. They need to hit boundaries and sixes now. It needs to galore in Sharjah Stadium if they want to make a match out of this. 30 balls, 70 to get. They need at least 14 runs in every over from now. Subshit has no clue what is happening. Well, this is champion match of the Superfix Championship Trophy. You need to have your champion player in the middle. I'm not sure why Bunty is sitting in the dugout. Well, unless he has a stomach upset, I don't see any other reason why he should not come out to bat. If not open, then on the first wicket at least. Indeed. Meanwhile, Sushid and some wide delivery. As I mentioned earlier, Shehzad does have a habit of bowling wide and no balls. Subshit and Krishna need to make sure they do not leave a task which is almost impossible for the Bunty. He is very much capable of even chasing down 35 to 40 runs in last 2 hours. But it has to be like that. The equation needs to be like that. Absolutely. No two questions about that, my friend. No ball. And Subshit is just not able to find timing at all. He is just getting too late on the ball. The pace is too good for him. He is clearly not able to pick the pace of the bowler. I mean, this was a full toss, and you know, any other batter, as we have mentioned, this would have been hit out, but here he could only manage to hit straight, and it's a no ball and it's a free hit. Well, free hit on offer here, and let's see what Krishna Satpute does to this particular delivery. It is going to be an important delivery in the context of the game. They need to score, they need to make sure that they need to find runs on this ball, they need to hit big on this. Pace is too good from Shehzad. Pace is too good, but he will provide you chances. He will keep on bowling those wides and no balls, as we have seen throughout the day. And it's Krishna this time. Well, full swing and missed. They are not able to pick the pace, Asim. I won't be surprised if Bunty is upset out there in the dugout. Why wasn't he sent out to bat? We are just not sure why he wasn't sent out. Well, a suspense for us really. He is one of the player of the tournament and sitting in the dugout in this crucial game. Shehzad to Krishna, bowled out! Another brilliant Yorker! And Krishna, who can be very handy, bowled out with the brilliance of Shehzad. This is sheer pace which is doing the damage to the Indian side here. The pace is something that they are not able to deal with. They are just not able to beat this pace. This is extraordinary stuff from the fast bowling factory unit. Pak MWI are on a roll. Well, talking about this game so far, Pak MWI is clearly on top. They have taken 2 wickets
Friend India is struggling. Look at that. Another brilliant Yorker. He was nowhere close to the line of the ball. Just swinging at it, missing it completely. And they have sent Bunty Patel out now after 8 deliveries. In fact, after 9 deliveries. He has lost 9 balls here. Well, we are seeing live over here Chote Payan and Bade Payan. They are the brand ambassadors, the people in white, Kandura, Zamzam Electronics. They are the brand ambassador of this Superfix Championship trophy. Well, back in the game, Asim. The man who can make the difference in the game. People in Gujarat will be praying for him, that he turns it around for Friends India. Not able to make connection there. That this is express pace coming in from Shahzad. He is bowling like a Shahzada. Is very expressive. Shahzad. The pace is what is actually creating problem for Friend Indians batters, because they have not got used to it, I believe, because still they are new in tape ball cricket. And I'm sure that if they are able to judge that, they will really go after these bowlings. Well, they would need time. I happened to speak to Bunty Patel and he said that we just practiced for 1 day with this ball. Wow. For this tournament. But Asim, is it not amazing the way they have put up the show? Every match, even if they have lost, they went very closer. They did not just thrown away. I mean, we have seen yesterday when they were playing against FMTK UAE, same person sitting in the standing in the middle, Bunty Patel, has taken the match till the last ball where 7 runs were required, and then they shocked another team earlier on. All the matches, even if they lost it closely. Well, that's one of the reasons why they are still positive in their net run rate. They desperately want to win this match in order to make sure that they're still alive in the tournament. Right in the block hole, but it's going to be a no ball. What a delivery. What a delivery, but it's a no ball, and it's a second no ball of this over. And I wish it would have been Bunty facing this particular delivery. But it will be Subshid who is struggling to meet the pace of these bowlers of Pak MWI. He is clearly coming late. Well, definitely. Last ball, free hit on offer. Can Subshid do something about this? Here comes the Shahzad, free hit delivery. He's bowled him, but that's a free hit. And it will be called as a bye. 2 overs gone, 15 for 2. Sardar Hasnain will be the new bowler. 2 overs, just 15 on the board. 64 to get in 4 overs. This has to be that big over. This has to be that big over. They need minimum 25 to 30 runs in this over. It has to be. And it's a wide ball. Yes. Well, I am, really looking after Bunty.
He's very enthusiastic. He cannot hold himself. He almost came back from the middle of the pitch. He wanted to go on the other end. Well, he wants strike. He definitely wants strike. He knows that he is the man who can make the difference now in this game. 16 for 2. Indeed. Sardar to Subshid. Short delivery this time. Well, only good thing he has done in this that Bunty is on the strike. Well, he has been really underperformed here, Subshid. He was pushed up the order before Bunty Patel. And this was not the way it was expected out of him to play. Now, you just can't blame him completely. It has been a fantastic bowling display from the bowlers from Pakistan. Yes. Bowlers from Pakistan means tape ball bowlers from Pak MWI who belong to Pakistan. And now, well, Bunty was there, but he can only manage to get a single. Well, Bunty needs to be on a roll and needs to be on a roll as soon as possible. This was just his second delivery. Look at Subshid Asim. He has faced 9 deliveries and scored only 6 runs. This is definitely going to backfire friends Indian team. Definitely, this is going to be 18 for 2 now. This scoring rate is definitely not going to help. Look at the crowd. They are just ecstatic. Especially after the last 2 sixes that was hit by Umar Gujjar. Yeah, they came at the right time for Pak MWI. Another brilliant delivery. Well, Subshid is really struggling here. They are just toying with Subshid with pace. They are just firing bullets at him. And he do not have any shield to tackle them. Shield, forget about the shield. He's just not able to get even the bat in, on time. That's express pace here coming in from Pak MWI bowlers. That is one of the reasons why you find a lot of fast bowlers coming in Pakistan. Definitely now, Sardar, he is up against one of the player of the tournament, Bunty. What is going to happen in this delivery? I feel something, and it just hit away for a single. Well, Bunty is absolutely angry with himself. This was an opportunity for him. Well, definitely that was an opportunity. He wanted to get underneath that ball and hit for a 6. But it's just not helping. It is just not helping. They need to hit 2 sixes now, at least, in order to be in the race to chase this down. Definitely, they need 6s and they need them soon as possible. Now, next 2 balls. No. Soonest as possible is the right term? Or should I say no? Now, next 2 deliveries should be hit out for 6s. Unless they are able to hit 6s to, if Zahir Kalia comes in bowl or Shahzad, they can hit him for 6s at their will. Why not? But it's an urgent need of the hour. Intentions clear, but just a single. Result is the same for Subshid. Subshid would like to forget this match. He would like to erase from his memories after this gets over. 10 balls, 11 balls, and he has just scored 7 runs. Now, again, the excitement is never ended until Bunty is at the crease and he is facing Sardar. The game is not over until it's over. We have seen tape ball matches go into the wire. Oh, that was a very good slower delivery coming in from Sardar Hasnain. Brilliant ball. And looks like that's the end of the over. Just getting too early onto the shot. And Sardar Hasnain giving him the same medicine. Nicely bowled Sardar. Slowish bouncer. Beaten Bunty with the pace. Well, Asim, I'm really feeling little pity for Bunty. I think when you come to bat after 2 overs with the score which is just below the required run rate, you put your shoulders down. I mean, your body language becomes negative.
he was a batter who was supposed to come as an opener. I don't know what was the issue, but if it was a decision by the captain to keep him away from Zahir Kalia, I'm not sure that was a smart move. Well, your best batsman needs to play the highest number of balls in the best game that you're playing. Very simple calculation. Absolutely. Having said that, I'm not asking Mahendra Singh Dhoni to come out and open when he's in form, but you need to make sure that he gets to play an impactful knock with the rest of the balls that are remaining. Exactly. And this time we have to check. Yes, way above the shoulder of the batter, rightly declared wide delivery by the umpire. Now tell me one thing, Nadeem. If he would have hit the ball, if that would have connected his bat, what would have that been? That would have been a legal delivery, right? And that would have been one of the over as well. That is debatable, Asim. Absolutely. As per laws, that's not debatable at all. But I mean, Umpires give it or not give it, that's their choice. But as per the law, that's not debatable. That's one of the over. oh, what a delivery! But there's a fielder backing it up. I think it will be a single in the form of Baez. Yes. No. It will be very interesting battle. Bunty, one of the player of the match, is facing Zahir Kalia. Definitely, it's going to be an interesting battle. Let's wait and see what happens next. Here comes Zahir Kalia to Bunty Patel. Quick, fast. Wants to get back on strike. And that's going to be just a single. He is too quick. Here comes Zahir once again. Down the leg side, and the story continues. The struggle of Subshit against pace of Pak MWI bowlers. They absolutely have no clue. "25 for 2. And Zahir Kalia. He's a threat. And why is he a threat? That's the reason in front of you. Just not able to score against him. Again a swing and a miss. Bunty Patel is also not able to connect. Well, Ustad for a reason. Ustad for a reason there. Zahir Kalia. .5, 25 for 2.
It's slipping away from the men in blue. Friends India are in trouble. Watch sheer dominance here. Bowling at its best from the men in green. Down the leg side, we'll have to wait for the signal of the umpire. Did that come off the boot? Well, there is a discussion which is going on between the umpire and Bunty Patel. Four overs gone, 25 for 2. Here comes Mubashir Rajput, number 11. Beautifully bowled. Bunty Patel wants to keep strike. If there's any man who can turn it around, it has to be Bunty Patel. He is also struggling against this mighty bowling attack of Pak MWI. Imagine with what ease Osama hit these bowlers. Zebi Butt, how ease did he hit these bowlers? That has been played straight down the ground. It's no ball, it seems, from Mubashir. No ball, and that's going to be a free hit on offer for Bunty Patel. The batting at run a ball now. Current run rate at 6 an over. Short delivery, well directed from Mubashir. And joining me in the com box is Daud Boch. Welcome back, Daud. थैंक यू सो मच आसिम एंजॉय कर रहे होंगे जरूर आप मैच को वेल काफी शानदार गेम. मैं यहाँ पर बड़ा एक्साइटेड था देखने के लिए क्या कितने अच्छी तरीके से बंटी पटेल यहाँ खेलते हैं पाकिस्तान MWI के बॉलर्स को. लेकिन काफी शानदार बॉलिंग यहाँ पर. नो डाउट अबाउट. लेकिन यहाँ पे ये चीज आप देखनी पड़ेगी कि जहीर कालिराजन को एक अरसा सदी बीत गई है टेबल क्रिकेट में अपना नाम बनाए. देन तैमूर मिर्जा, देन खुरम चकवाल, देन उमर गुजर ने जिसने आके आज हार्ड हिटिंग करी है, छोटा भी की मुल्तान. सो बहुत ज़बरदस्त. लेकिन दूसरी जानिब आपके बॉलर्स की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि मैं जहाँ पर अगर क्लियर वर्डू में बात करता चलो बीइंग अ कमेंटेटर तो 78 रन 6 ओवर्स में ये कोई टोटल नहीं है. ओवरऑल क्लियर वर्डू में बताता चलो, क्योंकि जो टेबल क्रिकेट को समझते हैं ये 6 ओवर में 120 रन का टारगेट देते हैं पाकिस्तान के अंदर. लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली प्रेशर था, एक बड़ी अच्छी, एक ने जीतना है एक ने हारना है, लेकिन आज पाकिस्तान अच्छा खेला है और अभी रिजल्ट शायद क्रिकेट के सामने है. वेल डेफिनेटली आई मीन मैं कहूंगा यहाँ पर ये मैच को काफी शानदार तरीके से यहाँ पर रोका है पाकिस्तानी बॉलर्स ने, खास करके उस्ताद जो इस टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं, टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं. कुछ खिलाड़ियों की तो उम्र भी नहीं है उतनी. कोई शक नहीं है.
ओ, चले दोबारा आने दे, माइक बंद थे माधुरी। दोबारा जब फिर से वो बोलने लगे आ जाओ कैमरा लेके दोबारा दाऊद भाई कैमरा दोबारा आया माइक बिल्कुल यहाँ पे कॉम बॉक्स के मनाजर शायकीन क्रिकेट तक पहुंच रहे हैं क्योंकि ग्राउंड में अजान चल रही है जिसकी वजह से थोड़ा वक्फा किया गया है। वेल बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी शानदार खेल देखने मिला है हमें, खासकर पाकिस्तान MWI के बॉलर्स की जानिब, खासकर जहीर खालिया। क्यों कहते हैं उन्हें उस्ताद, आज पता चल गया क्यों कहते हैं उन्हें उस्ताद। उस्ताद ने आपको उस्तादी दिखा दी है। नो डाउट अबाउट चेयरमैन नवीद अहमद साहब और खाबर लतीफ साहब, मैं समझता हूं आज जिन्होंने जो दिल है शायकीन क्रिकेट के जीत लिए हैं। नो डाउट अबाउट इस लेवल का इवेंट उन्होंने मुनक्किद कर दिया है कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। शायकीन क्रिकेट के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई थी। उसके अलावा आप अगर देखें तो यहाँ पे उम्रे का 2 पैकेजेस रखे, शायकीन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर फ्री एंट्री कर दी, फिर खाना टीम्स को दिया। सो इनक्रेडिबल मैं समझता हूँ यहाँ पे। नहीं, शानदार, काफ़ी ओवरऑल अच्छी यहाँ पे सेटअप की गई थी, खासकर सुपरफिक्स ऑटो सर्विसेज का एंटायर मैनेजमेंट में पूरी सबको क्रेडिट देना चाहूँगा। यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 बंदे से ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, एक टीम एफर्ट है और ये टीम एफर्ट ने ओवरऑल सक्सेस दिखाया। यहाँ पर पहली दफा देखा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का टेप बॉल मैच, यहाँ पर पाक MWI टेकिंग ऑन फ्रेंड्स इंडिया। नो डाउट अबाउट 27 रन आए हैं और गेंदबाज तैयार। बंटी पटेल ने इस दफा लॉन्च किया है लेकिन फील्डर मौजूद होंगे लॉन्ग ऑफ पोजीशन पे। ये क्राउड फैमिली स्पेशली इस टेप बॉल क्रिकेट के वर्ल्ड कप को एंजॉय करने के लिए आए हैं। आसिम वेल काफी शानदार यहां पे ऑडियंस, और पहला छक्का जो मैच के 5वें ओवर में लग रहा है और ये आया है शुभशीत के बल्ले से, जिनका अभी भी स्ट्राइक रेट अंडर 100। शुभशीत ने नवीद सुना दिया छक्का लगा के, और बेहतरीन बैटर है माशाल्लाह से शुभशीत भी। और ये अगर आज टेबल क्रिकेट यहां पे पहुंचे तो मीडिया का बड़ा अहम किरदार है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो पेजेस हैं फेमस, उनकी वजह से टेबल क्रिकेट यहां पे पहुंचे और यहां पे बेहतरीन विकेट आ जाएगी। छक्का लगाया था लेकिन उसके बाद एक बड़ा पैगाम रहा है, शानदार विकेट यहां पे मुबशिर राजपूत की जानिब से। बहुत ही शानदार गेंद यहां पर ब्लॉक होल में और मुबशिर को सफलता मिलती हुई, और इसी के साथ तीसरा विकेट फ्रेंड्स इंडिया का यहां पर गिरता हुआ शुभशीत लौटकर वापस जाते हुए पवेलियन की तरफ। इससे पहले फाइनल में मुजम्मिल कामों की उसामा अली सियालकोट की टीम है वो ऑटोमेटिकली पहुंच चुकी है, और वो फाइनल जब डेफिनेटली इंडिया की टीम यहां पे इस इवेंट से बाहर हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली खेल अच्छा पेश किया फ्रेंड्स 11 इंडिया ने, और अब ये मुकाबला दिखने वाला है क्योंकि शायकीन क्रिकेट अब इसके इंतजार करेंगे क्योंकि मुजम्मिल कामों की उसामा अली के साथ टक्कर होगी जब तैमूर मिर्जा और खुरम चकवाल की, तो वो मैच इससे पहले क्योंकि तैमूर मिर्जा लोग हार चुके हैं FMTK से। वेल इसका इंतजार करना होगा कि वो फाइनल पहुंचते भी है या नहीं, क्योंकि इसके पहले सेमीफाइनल होगा जिसमें आई थिंक मेरे हाल के मुताबिक नेक्स्ट दोनों टीमों का फैसला होना कि क्या इंडिया की टीम इस इवेंट में रहेगी या नहीं। मेरे हाल के मुताबिक अगला फिर मैच इंडिया और पाकिस्तान का आने वाला है, जहां तक मुझे लग रहा है स्कोर रेट बता रहा है। वेल इंडिया जीता सिर्फ एक ही मैच है, ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। रन रेट तो उसके बाद आता पिक्चर में, ये जीतना बहुत जरूरी था, और खासकर जो पिछला मैच आदम किंग भुट्टा से वो हारे हैं वो उन्हें ज्यादा पिंच करेगा। बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन अगला मैच ही बड़ा नील बाइटिंग मुकाबला होने जा रहा है। क्या सीरी लाइंस सेमीफाइनल में टीम पाक MWI तैमूर मिर्जा के साथ टकराएगी या फिर टीम आदम भुट्टा किंग है वो, सॉरी बुराक 11 है वो टकराएगी? ये वक्त अभी फैसला करेगा। सो इसका इट्स मीन टू से कि पाक MWI टीम है वो अभी इंतजार करेगी कि क्या श्रीलंका के साथ मैच खेलना है या फिर ओमान की टीम के साथ। नहीं, श्री लायंस के साथ तो मैच बिल्कुल नहीं हो सकता। वजह यह है कि श्री लायंस एक भी मैच नहीं जीती है। टीम फ्रेंड्स इंडिया फिर भी एक मैच जीती थी जो श्री लायंस के खिलाफ है। चांस ये है कि आदम किंग भुट्टा और बुराक 11 दोनों में से कोई एक की चांस है जो सेमीफाइनल खेल सकती है। हाई चांसेस ये हैं कि आदम किंग भुट्टा क्वालिफाई कर जाए। बिल्कुल, जितने भी हमारे नाज़रीन जियो सुपर की स्क्रीन पे जुड़े हैं, इसके अलावा दीगर जो प्लेटफॉर्म है हमारे मीडिया का, आप सबके सबका बेहद शुक्रिया। और
आज माशाल्लाह से 1 लाख लोगों ने एक टाइम लाइव मैच देखा है। ये इस सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी टेप बॉल वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बन गया है कि इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ी हाइप मिली डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, फेसबुक और साथ में कुल मिला के 1 लाख बंदा एक टाइम में लाइव देख रहा था इस टेप बॉल क्रिकेट के वर्ल्ड कप को, सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी को। और यहां पे फ्लिक करना चाह रहे थे लेकिन यहां पे बेहतरीन डिलीवरी, काफी शानदार गेंदबाजी यहां पर। उमर गुज्जर इसने बॉलिंग कर रहे हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं और ये ब्लॉक खोल में क्या बाल बंडी पटेल को, कोई जवाब नहीं। यहां पे कमाल की गेंदबाजी यहां पे मैन इन ग्रीन की। इस सुपर फिक्स चैंपियन ट्रॉफी ने अब टेबल क्रिकेट को इतना फास्ट कर दिया कि जो लड़के हैं, ओ माय गॉडनेस, फ्लिक शॉट उसामा अली वाला, झलक थोड़ी सी नजर आई लेकिन एक ही रन आ जाएगा। वेल, एक टीम ने हारना है, एक टीम ने जीतना है, ये इट्स द पार्ट ऑफ द गेम, बट बड़ा उम्दा यहां पे खेल पेश किया टीम पाक MWI ने और दूसरी जाने पाक इंडिया की, सॉरी टीम इंडिया की, पाक भारत की बड़ी शानदार बॉलिंग रही। गेंदबाज तैयार, एक रन आ जाएगा बासानी, फील्डर मौजूद होंगे, काउ कार्डर में फात भी चन्नू मौजूद थे। 35 रन अभी तक आए हैं। 36 for 3 after 5.3 and this is sheer dominance coming in from the men in green. Umar Gujjar was the man who pulled that show off with the bat and that'll just be a single. Bunty Patel could not pull it off. .4 overs, 37 for 3. ये बेहतरीन डिलीवरी यहां पे उमर गुजर की जानिब से, शानदार गेंदबाजी का सिलसिला है वो जारी सारी है। और अब तकरीबन पछताना का जब चिड़ियां चुग जाए खेत, आसिम मेरे हाल के मुताबिक जो खेत है वो सारे का सारा इन पाक MWI की चिड़ियों ने हाल ही कर ली है। सारा ही खेत ले गए चुक कर, कि शानदार परफॉर्मेंस है ये, डोमिनेंस आई वुड से एट इट्स बेस्ट, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पाकिस्तान इज द फैक्ट्री ऑफ फास्ट बॉलर्स। दे वर अनप्लेएबल, दे जस्ट कुड नॉट प्ले देम। सो शानदार जीत है वो पूरे पाकिस्तान को मुबारक दाऊद बूच की जानिब से और पूरी जितनी भी हमारी कम्युनिटी है टेबल क्रिकेट खेलने वाले की। बट हार्ड लक टीम इंडिया, क्योंकि बिकॉज एफर्ट अच्छी की, क्रिकेट हमें एक लेवल की चाहिए थी और उस लेवल की हमें क्रिकेट मिली। सो थैंक यू सो मच जितने भी शायक ने क्रिकेट, और यहां पे पाकिस्तानी की टीम यहां पे दुआ करते हुए एक बड़ी कामयाबी मिली है। मोहम्मद उमर भी मौजूद हैं, यूएसएस स्पेशलिस्ट टेबल क्रिकेट के वर्ल्ड कप का, स्पेशली पाक MWI वर्सेस टीम फ्रेंड्स 11 इंडिया का मैच देखने के लिए आए थे। और ये खुशी यहां पे दिखती हुई, अलग बयान करती हुई यहां पे, और खुरम चकवाल को यहां पे इनाम है वो दिया गया है 500 दिरहम। Overall fantastic game of cricket here. First of all, I thought that it was a very mediocre total which was being posted there by Park MWI, just 78 runs on board, but after that the way they bounced back, courtesy to Ustad Zahir Kalia, he bounced back pretty strong. ये चीज हमें चाहिए और ये चीज हमें चाहिए, क्योंकि आप देखें कि दोनों टीमें आपस में मुलाकात करते हुए, और जिग्नेश ने साकी स्पोर्ट्स का बैट पकड़े हुए और ये हमारा ऑफिशियल स्पोर्ट्स पार्टनर है। थैंक यू साकी स्पोर्ट्स, इनाम मुगल अफजल भाई। और इस टाइम दोनों ममालिक में प्यार मोहब्बत का पैगाम, क्रिकेट है एक टीम ने जीतना एक ने हारना है, बट हम एक हैं, टेप बॉल क्रिकेट खेलने वाला हमारे दिलों में बसती है। और आज दाऊद भी जिस फार से बता रहे कि टेप बॉल एक दुनिया में एक इंडस्ट्री बन चुकी है बहुत बड़ी। बहुत बहुत मुबारकबाद पाकिस्तान टेबल क्रिकेट के फैंस को, जो खेलने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, सबका बेहद शुक्रिया। और अभी से फोटो सेशन आप देख सकते हैं फातमिया चन्नू के साथ जारी हो चुके। मैं नवीद साहब हमारे इस इवेंट के चेयरमैन
को मुबारकबाद देना चाहूंगा। उनके साथ साथ वाइस चेयरमैन खबर लतीफ साहब को मुबारक